So let's start with some basic things. We are studying properties of bulk matter and in that primarily elasticity. So the general idea about elasticity is you have general idea, they teach you this in school, right? A body is said to be elastic if it can regain its original shape size after removal of deforming forces. So we'll start definitions starting from deforming force. Okay. So what do you mean by deforming force? It is defined like this. The change in shape or size or both of a body due to an external force is called deformation, and such a force is called deforming force. This is the general definition. Then we can define elasticity again. Once we define deforming force, let's define elasticity. What is elasticity? What is elasticity? If a body regains its original shape and size after removal of deforming force, it is called elastic body, and the property is called elasticity. Okay. Then we are talking about elastic body or not elastic particle, correct? Remember this collision wala concept nahi beech mein lana hai, theek hai? Now here we have perfectly elastic body. If a body regains its original shape and size completely and instantaneously upon removal of deforming force, then it is said to be perfectly elastic. That means जैसे ही आपने force remove कर दिया, if the body gets back to its original dimension, shape, size, सब कुछ, यानी particle by particle उसका position same होना चाहिए जो पहले था, then we call it perfectly elastic body. Now definitely perfectly elastic body is hypothetical, यानी reality में कोई भी body perfectly elastic तो नहीं होता. Then we can also define perfectly rigid body. A body is said to be rigid if separation between any two particles of the body remains the same under the application of force of any magnitude. So you apply a force of any magnitude and it is not going to deform. Such a body is called perfectly rigid body, and of course we also know that that too is a hypothetical condition. And we have to define plasticity also. If a body does not regain its original shape and size and retains its altered shape or size upon removal of the deforming force, it is then called a plastic body, and the property is called plasticity. So you have to remember these things. What are these things? Okay. Now origin of elastic behavior of solids. अभी origin क्या होगा इसका? ये कहाँ से होता होगा? Why bodies show you elasticity? So where is the origin? Yes. Yes. What will be the origin? When some work is done on the body, it like changes its length or something. See, when a body, if you want to go for a simple model, very simple model, then very simple model, in very simple model of elasticity, you can assume that a body is made up of molecules and they are attached to their nearby molecules by electromagnetic interactions, right? Which behave like spring. So if you try to push it closer to each other, it will get repelled. If you try to pull it away, it will start attracting each other. This is the simplest model. Okay. Even though it is not perfect, definitely it's not a perfect model, but you can still somehow apply this model to understand what happens inside the material. So if you try to compress something, the particles inside will try to come closer to each other, and there will be electrostatic repulsion. If you try to stretch it, the particles are moving away, so there is still electrostatic repulsion, which will there is electrostatic attraction between the two particles, adjacent particles, and it will try to pull the body back. So this is the simplest model. We don't want to get into details of this, but this is just a general idea of origin of elastic behavior. Okay, then you can see this graph. Here is a graph. Now this graph shows you the there is a graph. Now this graph shows you intermolecular force or intermolecular attraction repulsion with respect to distance between the two molecules. So you can see that when distance is very large, there is no force, almost no force. Then of course, what I've done is it is plotted against potential energy. So when potential energy is negative, we know that we have studied gravitation. So we know that when potential energy is negative, it means that there is attractive force between the particles. So there is attractive force. The force goes on increasing, so potential energy goes on decreasing, and here is a point where the force becomes maximum. Okay. So here there is a point where the force is maximum. This is the point where force is maximum attraction.
and thereafter the force changes to repulsion. So if the distance decreases below this distance, means less than this distance, then there will be repulsion between the particles. And if you try to increase the distance, then there will be attraction, causing the spring like behavior, giving us elasticity of the substance, or elasticity of the sample. Okay, now solids ke case mein there is elasticity of shape and size both. That means solids will mostly, of course not all, but mostly elastic solids will try to regain their shape as well as size. Shape as well as size means volume will remain the same after removal of the force, deforming force, and shape जो था वैसे हो जाएगा. While liquids and gases, they only have elasticity of volume, they don't have elasticity of shape. मतलब उनके सारे particles अपनी जगह पे नहीं चले जाएंगे, ठीक है? Okay, so now forces का calculation कैसे करते हैं, तो I'll show you one FPD. ये आपको draw करना पड़ेगा. ऊपर वाला diagram याद, graph जरा ध्यान में रखो, ठीक है? Because that graph is asked many times in exams like NEET. So consider an elastic string as shown. तो जब आप एक elastic string, अभी ये string है and it is fixed at one end, okay? उसका left hand rigid support के साथ fix करके रखा है, and F is the deforming force acting on that string. F is the deforming force acting on that string. तो F एक point पे आपने उसे खींचा और पकड़ के रखा, then what happens? There will be a restoring force produced inside. This restoring force is called tension. Okay, जो मैंने यहाँ पे FR दिखाया है. So how it works? तो अगर मैं FBD बनाने की कोशिश करूं, then what will happen? FBD कैसे आएगा इसका? If you look at it as whole, entire string, यानी support छोड़ के उसका support से निकालो और सिर्फ string का FBD बनाओ, support नहीं होगा उसमें. तो FBDs दो है यहाँ पे, एक लेफ्ट में एक राइट में. तो उसमें से लेफ्ट वाला देखो जरा. If you see that there will be a force acting on this, तो support reaction यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये आपका फोर्स है और बीच में स्ट्रिंग है. वाइल स्ट्रिंग के अंदर ये दो फोर्सेस दिखेंगे आपको विच आर इक्वल एंड अपोजिट. ये एक्शन फोर्स है, तो आपका सपोर्ट पे रिएक्शन होगा, और स्ट्रिंग के अंदर ऐसे दो फोर्सेस आएंगे, ठीक है? अभी ये कट करके दिखाया स्ट्रिंग को मैंने. सो दिस इज द टेंसाइल फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग. ओके, तो फोर्सेस को ऐसे दिखाना आपको. अगर टेंशन है तो स्ट्रिंग को कट करो और अंदर की तरफ दिखाओ, और इलोंगेशन वाले फोर्सेस है, यानी उल्टा, मतलब ये टेंशन है, मतलब इलोंगेशन करने के लिए है तो अंदर के फोर्सेस उल्टे दिखाते हैं, और कंप्रेस कर रहे हो तो अंदर के फोर्सेस बाहर की तरफ दिखाते हैं. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू शो देम, ठीक है? सो अंडर इक्विलिब्रियम दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एंड इट हैज टू बी, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम में स्ट्रिंग, वरना तो स्ट्रेच होते ही जाएगा. तो अगर उसका स्ट्रेचिंग रुक गया है कहीं पे जाके, सो अंडर इक्विलिब्रियम दिस एफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बार. एफ बार इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है? So this is how it works. ये जरा diagrams draw कर लो, and then we'll proceed to the next point. So let's try to define few more physical quantities here now associated with all these things. First quantity we have here is called stress. Okay, the first quantity we have here is called stress. Now what is stress? Stress is defined as the internal restoring force per unit area of a body. Okay, so when I say per unit area of the body, which area? The area of that surface on which the force is, area of the surface on which the force is acting. Now this quantity is called stress. So stress is defined as restoring force per unit area, but under equilibrium we know that restoring force is equal to deforming force. ये same होता है. So under equilibrium the stress can be simply written as F by A. Okay, and its SI unit is same as that of pressure. प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इसको पास्कल नहीं लिखते जनरली, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है? बट कुछ जगहों पे लिखा हुआ भी मिलेगा. यूजुअली दे डोंट राइट इट इन पास्कल, बट ठीक है, हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी हैव इज कॉल्ड स्ट्रेन. नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रेन? Strain is defined as the ratio of change in dimension of the body to its original dimension.
सो चेंज इन डायमेंशन मतलब उसका जो भी लेंथ चेंज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एरिया चेंज हो रहा है तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया एंड सो ऑन. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन. ओके, अभी इसमें आप अलग अलग तरीके से इसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस से इफ वी हैव लीनियर ऑब्जेक्ट. अभी मैं ये सबको यूज करके दिखा रहा हूँ, ये डेफिनेशन को हम यूज करेंगे. ओके, फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग, रॉड एटसेट्रा, इसके साथ क्या हो सकता है? तो इसके साथ वी हैव सिचुएशंस लाइक दिस, राइट. इसके साथ हमें ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं. ओके, ये डायग्राम्स क्योंकि मैंने डायरेक्टली कॉपी कर दिए तो दे माइट नॉट बी दैट गुड, बट कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. So this is one diagram and this is the other one. Okay, so so what I'm trying to show here is length wise compression है ये फर्स्ट वाला, और ये elongation है. दोनों देख सकते हैं आप, एक में लेंथ बड़ा हुआ दिखा है, एक में लेंथ छोटा हुआ दिखा है. ठीक है, एंड इन दिस केस इसे हम कहते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ओके, इसको हम कहते हैं और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. और ये स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेस, देन हाउ डू आई कैलकुलेट दिस स्ट्रेस? This type of stress is calculated as force F, which is used to elongate it. So longitudinal stress is F by A divided by area of cross section. वही अगर मुझे longitudinal strain calculate करना है तो वो होगा change in length, which I am denoting it by small l upon capital L. Similarly, if you are having 3D bodies, then 3D bodies के केस में क्या होता है? For 3D bodies आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिख रहा है, समझो. Suppose this is the situation, एक sphere है और आप उसको सारे साइड से दबा रहे हो, या एक क्यूब है या क्यूबॉइड है एंड यू आर ट्राइंग टू प्रेस इट. प्रेस एक्सपेंशन भी हो सकता है बट मैंने कंप्रेशन दिखाया. देन इसे कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. इसका कैलकुलेशन करेंगे आप फिर से वही F by A, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन का कैलकुलेशन करना है आपको तो आप करेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सो इट इज माइनस dV अपॉन V. ठीक है, अभी मैंने माइनस लिखा है क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम. जनरली कंप्रेशन के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं ये सब. और तीसरा एक होता है शेयरिंग स्ट्रेस. ये शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है ये बॉडी के डिफॉर्मेशन के लिए होता है. मतलब ऐसा कुछ, इफ यू वांट टू सी इट इन डायग्राम, ऐसा कुछ दिखना चाहिए. व्हाट वी आर डूइंग, ये पहला बॉडी आपके पास बॉडी है ये, तो उसको आप ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऊपर वाले सरफेस पे, सो दैट इट चेंजेस इट्स शेप. इसमें ट्विस्ट भी आता है. ट्विस्ट मतलब ऐसा टॉर्क लगा के ट्विस्ट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके कैलकुलेशंस अलग से करते हैं. सो आई विल शो इट एज टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस में हम क्या करते हैं? व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. ओके, टेंजेंशियल फोर्स पैरेलल टू द टॉप एंड बॉटम सरफेसेस ऑफ द ब्लॉक. अब देख सकते हैं ये एक्चुअली उसका बैलेंस करने वाला फोर्स है. द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट area are developed due to applied tangential force, and this is called shearing stress or tangential stress. और इसका कैलकुलेशन ना कुछ ऐसे करते हैं. ओके, दैट इज टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब जो ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसके जितना होगा वो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. इन दिस डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको. इन दिस डायग्राम, if this angle is theta, in this diagram if this angle is theta, ये एंगल को थीटा कर लो. ये यहाँ पे जो एंगल बना ना, if this angle is theta, if that angle is theta, then shearing stress कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो it is calculated as tan theta. तो tan theta अगर डायग्राम में देखते हो आप तो वो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल से x हुआ है और ये हाइट h है, तो इट इज x अपॉन h which is tan theta. ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन. इसे ऐसे कैलकुलेट करना होता है. फाइन. और इसी में एक दूसरा पार्ट होता है टॉर्शनल स्ट्रेस. अभी ये बेसिकली हमारे सिलेबस में कहीं पे लिखा नहीं है बट मैं ऐसे इधर ऐड करके रखता हूँ. टॉर्शनल स्ट्रेस, इसके फॉर्मूले ऐसे दिखते हैं. ये बस बाजू में रख दो, कभी जरूरत पड़ी तो विल गेट बैक टू दिस. ठीक है, ये क्या है कि आपने टॉर्क किसी रॉड को ट्विस्ट किया, ऐसे इमेजिन करो. ठीक है, सो यू आर अप्लाइंग टॉर्क टाउ या टी, जैसे उन्होंने लिखा है उसमें टी लिखा है तो टी. ओके, देन शेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? तो ये कैलकुलेशन ऐसे करते हैं. टाउ इज शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब ये टॉर्शनल स्ट्रेस, सॉरी.
तो टॉर्शनल स्ट्रेस विच इज shear stress in this case upon radius is equal to torque upon j, while j क्या है तो pi d square by 32 for solid rod. ये सबके लिए अलग होता है, ये j का वैल्यू सबके लिए अलग होता है, तो I've kept the most general one जो हमें बहुत बार दिखेगा. ठीक है, इसके पीछे ज्यादा मत पढ़ो, कभी एक आध प्रॉब्लम में यूज करना है तो उधर का फॉर्मूला खाली याद रख के छोड़ दो, बिकॉज दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बुक. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थियोरी. नाउ ये तीन टाइप के स्ट्रेस हमने डिफाइन कर लिए, एक्चुअली चार कर लिए. वन इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, दोनों डिफाइन किया. लॉन्जिट्यूडनल देन वॉल्यूम यानी बल्क, देन शेयरिंग स्ट्रेस, और ये टॉर्शनल एक डिफाइन कर लिया इन एडिशन टू दैट. नाउ लेट्स कम टू हुक्स लॉ. नाउ हुक्स लॉ बहुत सिंपल सा है. It states that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Okay. So within elastic limit, stress is directly proportional to strain. अभी इसमें elastic limit क्या होता है, तो that I'll define separately. The maximum value of stress up to which strain, यहाँ पे ये typing error हुआ है, strain is directly proportional to the, sorry ये गलत कुछ हो गया. Maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain, sorry fine my mistake, stress is directly proportional to strain is called elastic limit. मतलब आपको चेक करना है, ये इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. अभी आप कॉलेज जाएंगे तो you will do something called Young's modulus by Searle's method. तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट में you can see how these things are done. अभी हम लोग क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो we are just looking at the things theoretically. तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, सो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दोनों में से किसी भी, मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्योंकि वैसे डिफाइन करते हैं उसे, इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E ऑफ द मटेरियल. ये हमने साउंड में यूज किया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वर्ड सब यूज किए हमने. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E ऑफ द मटेरियल, इसे बोलते हैं the ratio stress to strain which is constant, of course within elastic limit. ठीक है, अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जरा थोड़ा सोचते हैं क्या होता है. तो the modulus of elasticity of material is the ratio of the stress to corresponding strain within elastic limit. Larger the magnitude of modulus of elasticity, higher is the elasticity of material. इसका मतलब क्या होता है, higher elasticity का material of the material का मतलब होता है get deformed easily. नहीं, it is difficult to deform them actually because they restore easily. Try to understand this. Okay, means if I ask you the question, stainless steel wire and rubber wire or rubber band having same dimensions, which one is more elastic, then the correct answer is stainless steel has more elasticity. Reason? It is difficult to deform it. That actually means it is having more restoring force per unit area. It will have more restoring force. Okay. Now in this modulus of elasticity section, we have to define three moduli. First is called Young's modulus. Now definitely ये length, हमने तीन stress strain के definitions किए ना, वैसे तीन stress upon strain के definitions करेंगे. So it is the modulus of elasticity related to change in length of an object like metal wire, rod, beam, यानी one dimensional object due to the applied deforming force. Hence it is called elasticity of length. ठीक है, तो Young's modulus को आप define कैसे करेंगे? So Young's modulus is defined as longitudinal stress upon longitudinal strain. So this is then further mathematically written as F into original length. F is restoring force, which is deforming force under equilibrium. F into L upon A into small l. Small l मैंने elongation के लिए लिखा है. In some books they write it as, they don't write small l. Instead they write delta L. In some other books they write E for elongation. Okay, or extension. So generally ऐसे लिखा होता है, मैंने small l लिखा है. So SI unit Newton per meter square. Young's modulus indicates the resistance of elastic solid to elongation or compression. ठीक है. Similarly, we have bulk modulus. So what will be bulk modulus? तो ये वो होगा volume stress upon volume strain. So this is the modulus of elasticity related to change in volume of an object due to applied deforming force. Hence it is also called elasticity of volume.
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, और इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे हम K इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड देन K कैलकुलेशन तो हमें मैथमेटिकल ऐसे ही करना होता है, K इज इक्वल टू F अपॉन A डिवाइडेड बाय माइनस dV अपॉन V, सो माइनस V dP बाई dV, ये आंसर आता है आपका माइनस V dP बाई dV, एंड माइनस V dP बाई dV, ये हमने कहीं पे यूज अभी तक तो नहीं किया, बट विल बी यूजिंग दिस इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ओके, अ लॉट ऑफ इट, ठीक है। फिर आपको याद रखना है इसका भी एसआई यूनिट वही आएगा, क्या आएगा, एसआई यूनिट तो वही आना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड यू विल हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, the reciprocal of bulk modulus of elasticity is called compressibility of material, तो word compressibility याद रखिए, what is compressibility, it is reciprocal of bulk modulus of bulk modulus of elasticity. Then lastly we have modulus of rigidity eta. Now modulus of rigidity eta is related to change in shape of the object, called rigidity modulus, okay, and it is the property of solids only because they possess definite shape, liquids gases के लिए तो नहीं होता है। एंड ईटा का वैल्यू आएगा आपका शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे वही सेम F अपॉन A into X upon H, which is FH upon AX, which is F upon A tan theta. If theta is very small and measured in radian, then F upon A theta, because tan theta is almost equal to theta. SI units इसके होने चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम, ठीक है। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूल जिनको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं। देन वी कैन मूव टू फ्यू मोर, ये ना 1-1.5 घंटे में आप इसका पूरा थियरी कर सकते हैं, देन उसके बाद बाकी जो काम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज, दिस इज कॉल्ड, नाउ आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग, दिस इज, ये अगेन अ वियर्ड नेम, people pronounce it as poison, poisson, whatever you want, okay, it's not poison, it is Poisson's ratio denoted by sigma, and this Poisson's ratio sigma is defined as the ratio of lateral strain to longitudinal strain. अभी इसका मतलब क्या होता है समझ लो, if you stretch a rubber band, then rubber band का लेंथ तो बढ़ जाता है, राइट, तो उसमें longitudinal strain प्रोड्यूस हुआ along the length, बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम भी तो होता है, तो दैट इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन, वहां पे जो डायमेंशन चेंज हुआ पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। तो अगर आप इनका रेशियो करेंगे तो इनका रेशियो को हम बोलते हैं Poisson's ratio sigma. Suppose a wire is fixed at one end and a force is applied at its free end so that the wire gets stretched. Length of the wire increases, at the same time its diameter decreases, right? So it is wire becomes longer and thinner. By definition of Poisson's ratio for the wire is Poisson's ratio for the wire is given by sigma is equal to lateral strain upon longitudinal strain. So that is lateral strain तो होता है change in diameter upon original diameter divided by change in length upon original length, ठीक है। सो उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, अभी देखिए अगर लेंथ बढ़ा तो डायमीटर कम होगा, भूलना मत, सो इसलिए वो ऊपर वाला माइनस लिखा है, तो माइनस डी फॉर कैपिटल डी फॉर डायमीटर अपॉन dl by l is l upon d times dd upon dl, ये उसका फॉर्मूला है जनरल फॉर्म, इसका रेंज होता है इसके वैल्यूज का, सो रेंज इज फ्रॉम -1 to 0.5, कहां से कहां तक, -1 से 0.5 तक, ठीक है। कॉर्क एक सब्सटेंस है जिसका वैल्यू आता है 0, यानी कॉर्क को अगर आप इलोंगेट करने जाएंगे तो कॉर्क में कोई डिफॉर्मेशन, लैटरल डिफॉर्मेशन आपको नहीं दिखता है, और रबर का आंसर आता है 0.5, ठीक है। वाइल नेगेटिव आंसर्स कब आते हैं, तो नेगेटिव आंसर इंडिकेट क्या करता है, negative answer indicates that the diameter increases with increase in length. Some specific type of materials having specific type of structures inside, they can only do this, बाकी सबके बस की बात नहीं हो, जैसे कुछ पॉलीमर्स होते हैं उनका अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उनका डायमीटर क्रॉस सेक्शन बढ़ता, कम होने से बदले बढ़ता है, दे आर डिजाइंड लाइक दैट, ओके। सम पॉलीमर्स आर लाइक दैट, बाकी के सब्सटेंसेस में आपको यू विल गेट वैल्यूज ऑल द वे फ्रॉम 0 to 0.5. Have you understood this? Now there is elastic potential energy of a stretched wire. अभी ये एक इंटरेस्टिंग चीज है,
So what is elastic potential energy of a stretched wire? So consider a wire of length L, ठीक है, and area of cross section A subjected to force F as usual, ये तो सब standard notations use कर रहा है, and length increases by small f. Then while being stretched, उसके साथ क्या होगा? While being stretched, ठीक है ना, let x be the elongation at any instant, मतलब वो छोटा L तक पहुंचने से पहले आप x कुछ elongation होगा ना. Now what is the restoring force at that point? What is the restoring force at that point? So restoring force क्या होता है? Restoring force F is equal to, अभी आप कैसे करेंगे restoring force, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये डेफिनेशन पता है y का, F L upon A L, राइट? तो restoring force F will be y A, ये स्मॉल l लिखा है वो इलोंगेशन है, करेक्ट? तो आप कैसे लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स? अगर आपको लिखना है तो F is equal to y A elongation divided by कैपिटल L, बराबर? अब ये इसमें से इलोंगेशन को मैंने x लिखा है, तो y A x upon L should be my answer there, right? तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ वापस. What is the answer here? What is the answer here? y a x upon l. Y A x upon L and with minus sign because it is restoring. Restoring force उल्टा होता है ना, अंदर की तरफ होता है. So that's the restoring force, where y is the Young's modulus, of course. Now, if the wire is to be further stretched by small distance dx under equilibrium, then work done against restoring force is given by work done, तो होता है force into displacement. तो force तो left में है इसलिए minus f लिखा मैंने, और dx right में है, तो फिर मुझे दो बार माइनस माइनस मिलना चाहिए इसमें. So we are writing dw is equal to minus of minus y A by L into x dx, right? Now once you write this, उसमें से माइनस साइन हट जाएगा और आपको मिलना चाहिए y A by L x dx. Now once you get that, can you find out total work to stretch the wire from x is equal to 0 to x is equal to small l? Definitely it is done by integration. So integrate this. What is the net work done? So it is 0 to w integration of 0 to L x dx, and x dx का integration अगर 0 to L करना है तो वो x square by 2 यानी L square by 2 आ जाएगा. You know this, right? Integration तो x square by 2 आ ही जाएगा. Then you do all the substitutions, whatever substitutions are needed there, and we end up getting this answer. Work done in stretching the wire from 0 to elongation L is y A upon capital L into elongation square times 2. Elongation square divided by 2. So W is equal to half y A L upon capital L times L. Now this work done is stored in the form of potential energy of the stretched wire. यानी जब आप उसको restoring force, deforming force को हटा देते हो तो उसे एनर्जी चाहिए ना वापस कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है? So you can always write U is equal to W. We can always write this U is equal to W. So U is equal to half y A L upon L capital L into small l. अभी मैंने सेपरेट करके लिखा है, ये भी वैसे ही लिखा है, यहाँ पे L स्क्वायर और ये L अलग से लिखा है, यहाँ पे भी मैंने अलग से लिखा है L. तो इसका फायदा क्या हुआ? वो y A L का वैल्यू F होता है, करेक्ट? तो इसलिए मेरा आंसर है एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ F times L. F is the force, correct? Now if I want to find out how much energy per unit volume is stored in that stretched wire, then I can always write U upon V is equal to half F into L upon V. V is volume, right? V is volume. Okay. So then U upon V, volume को तो आप A into L लिख ही सकते हैं कभी भी. It is area times length, area of cross section times length. So this becomes, अभी इसे ठीक से देखो तो ये F upon A तो stress है और small l upon capital L तो strain है, तो it becomes half stress into strain, right? So therefore U upon V is equal to half. Now I can substitute इसे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने substitution क्या किया, because Y is equal to stress upon strain. आप सब्स्टिट्यूशन कर लो तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको एक मिल जाएगा, या तो ऐसे कर लो, राइट? हाफ
y upon stress square. So this is one major part of the theory of the chapter. अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, थियोरी इतना ही है, ठीक है, थियोरी इतना ही है, और दूसरा एक पार्ट है थियोरी का, बट बेसिक थियोरी इतना ही है, बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करना होता है आपको, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो अभी इसके साथ इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, जरा थोड़े प्रॉब्लम्स पहले इसके करते हैं, फिर एक छोटा सा दूसरा पार्ट है दैट विल सी लेटर ऑन. इन टुडेस लेक्चर विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है. जस्ट टेक बुकलेट, चेक करो जरा.